सेकेंड हाफ स्टार्ट करते हैं. प्लीज शेयर योर आंसर विद payment period quarter and interest period weekly. What will be the value of K and C? Okay, making it easy for you. How many weeks are in a quarter? How many weeks are in a quarter? 16. It's wrong. If there are 3 months in a quarter, so how many weeks will be? 12. Okay, it will be, if we consider 4 weeks in a month, then it is 12. But if we just see that there are 52 weeks in an year, so there are 4 quarters, it means there are 13 weeks in a quarter. So we usually take 13 weeks in a quarter. So the change will be in the value of C. C will be 13 in case of interest period is weekly. Is there any effect on K? अगर पेमेंट पीरियड क्वार्टर ही रहता है तो के पे भी कोई इफेक्ट होगा? No, sir. No. Okay, that's correct. I'll share and you can compare your result for weekly. So K is 4 payments per year, C is 13. 1 plus R over CK raised to power C minus 1, and it is 2.0186% per quarter. You can do one more calculation. If the payment period is quarter and interest period is quarterly. Payment period is quarter and interest period is quarterly. Payment period quarter, interest period quarterly. It's easy. इसको सॉल्व करके काइंडली बताएं. कि हमारे पास इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पर पेमेंट पीरियड क्या निकलता है.
अगर इंटरेस्ट पीरियड हम क्वार्टरली कर दें तो सी की वैल्यू क्या होगी? ये तो 13 ही होगी ना? नहीं, पेमेंट पीरियड क्वार्टर ही रहे, इंटरेस्ट पीरियड हम वीकली की बजाय क्वार्टरली कर दें। ओह, 1। इट शुड बी 1। तो इसकी एग्जांपल देख लें। पेमेंट पीरियड इज क्वार्टर, इंटरेस्ट पीरियड इज क्वार्टरली। ये यहाँ पे जो क्वार्टर्स बनाए हुए हैं उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरेस्ट पीरियड्स की है, इसीलिए यहाँ पे आपको डिटेल में हर एग्जांपल में बताया गया है। अब क्योंकि इंटरेस्ट पीरियड क्वार्टर लिया, इसका मतलब एक क्वार्टर में एक ही बार इंटरेस्ट होगा, ठीक है, और वही पेमेंट पीरियड भी है। अब हमारे पास के है 4 पेमेंट्स पर ईयर, while C is 1 interest period per quarter. So we are putting this information in the formula, and you can get this result 2% per quarter. That is effective interest rate per quarter. So looking at, you can calculate for daily as well. If C approaches to infinity, means continuous compounding, then we have this formula, we apply the limit, and that is reduced to e raised to power r into 1 over k minus 1. We can directly apply this formula for continuous compounding. And for continuous compounding, applying the formula, and you will get this result 2.0201% per quarter. Now we will see the comparison again. You can have a look and then we will draw a conclusion. The case 0 is compounded quarterly, case 1 is compounded monthly, case 2 is compounded weekly, and case 3 is compounded continuously. You can even calculate for weekly, and that will be, you will get values in between these two. What will be the conclusion in this case? वैल्यूज में क्या चेंज नजर आ रही है? Here we can again conclude that if we are having more compounding periods, then the value is increasing. फ्रॉम मंथली टू वीकली पे अगर आ जाते हैं तो आपकी वैल्यूज जो है वो इंक्रीज हो जाती है, इसी तरह वीकली से कंटिन्यूस पे आ जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है।
जितनी ज़्यादा कंपाउंडिंग होगी उतनी ज़्यादा ये जो है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पर क्वार्टर इंक्रीज होता जाएगा. Now, which one to use R or I? Some problem states only nominal interest rate. The nominal interest is frequently stated for loans. The effective interest rate is always the used one in published interest tables, time value of money formulas, spreadsheets. Remember, always use effective interest rate in solving problems. हम effective interest rate को use करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी हमने जो है डिटेल भी देख ली थी कि effective interest rate is actual which is being applied. This is all about today's lecture. We have covered the effective annual interest rate and effective interest rate per payment period. Now I will share the solution of quiz 2 with you. Quiz number 2 जो हमारा लास्ट वीक में हुआ उसका सॉल्यूशन शेयर करता. डेप्रिसिएशन का जो प्रॉब्लम किया था उस पर हमने डी एन का फॉर्मूला यूज करना था. डी एन इज इक्वल टू अल्फा आई 1 माइनस अल्फा रेज टू पावर एन माइनस 1. N is for each passing year, small n, 1, 2, 3, 4. अल्फा की वैल्यू गिवन थी 0.25, आई भी गिवन था 80,000. यू जस्ट नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला. D1 आपने फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया 20,000 और द बुक वैल्यू B1 इज 60,000. 80,000 में से 20,000 माइनस कर दिए तो 60,000 आ गया, ठीक है. इसी तरह से वी हैव कैलकुलेटेड D2 एंड D3. And you are supposed to tell the value of depreciation in year number 4. As you can see that with the calculation you can get this 8,437.5, but the book value is 3,375. No, it's 33,750. 33,750, while the salvage value is 30,000. So this value, book value, cannot be below that 30,000. It means the depreciation, whatever we will calculate from the formula will not be used, but only the difference between B3 and B4 will be taken as the depreciation for year number 4. So the answer was 3,750. 3,750. जी, डेप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन है ये. फॉर्मूला हमने यूज़ किया, उससे हमने कैलकुलेशन की. ईयर 4 की डेप्रिसिएशन निकालनी थी. ईयर 4 की डेप्रिसिएशन की वैल्यू ज़्यादा आ रही है और ये वैल्यू अगर हम बुक वैल्यू में से माइनस करते हैं तो हमारे पास बुक वैल्यू 3,000 से कम हो जाएगी. लेकिन टैक्स लॉ जो है, जो रूल्स हैं वो हमें क्या कहते हैं कि सैलवेज वैल्यू से बिलो वैल्यू नहीं जा सकती. इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन होगी वो सिर्फ उतनी ही अमाउंट होगी जो कि सैलवेज वैल्यू से ड्रॉप ना कर सके. सो द आंसर इज 3,750.
जी किसी को ने कोई बात पूछनी हो, कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आया हो सॉल्यूशन? ओके नो सर, समझ आ रही है सर। ब्रेक इवन पॉइंट पे रेवेन्यू इट वाज वेरी इजी टू कैलकुलेट। आपने ब्रेक इवन क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना था एंड यू विल गेट द रेवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट। Both these values were given. Break even quantity 3500, selling price was 80. So the revenue at break even point was 3500 multiplied by 80. That is the answer. जी पूछें अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन, कोई बात समझ ना आई हो। झूठ मुंडे ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ